नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू RSSDI Diabetes Bytes। मुझे आपका स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है और आज का एक बहुत खास विषय हम लेकर आए हैं आप सबके लिए। बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि पिछले कई सालों में आप लोगों ने डॉक्टरों से सुना होगा कि विटामिन डी लेना है, आपके विटामिन डी के प्रमाण बराबर होने चाहिए। तो कोविड के दिनों में उसका काफी उसके महत्व पे काफी बातचीत हुई है और काफी वो फोकस में आया है, तो सभी को मालूम था कि हाँ, विटामिन डी हमें जरूर लेना है। तो ये एक विटामिन है जो कि सूर्य किरणों से थोड़ा उसका लगाव है, तो आज हम समझेंगे उसके बारे में और भी। लेकिन एक और दिलचस्प बात ये है जो कई लोग नहीं जानते हैं कि उसका एक बहुत खास रिश्ता है डायबिटीज के साथ। तो उसकी वजह से आज हमने ये डी या और द सनशाइन विटामिन एंड डायबिटीज के बारे में बातचीत करें। और हमारे साथ है तीन बहुत ही काबिल और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड विशेषज्ञ हैं हमारे साथ, और मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। हमारे साथ है डॉक्टर विनायक सिन्हा, और हमने खास ध्यान रखा है कि हम भारत के हर एक कोने से एक्सपर्ट्स लेके आए आपके लिए। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर विनायक सिन्हा का। वो है फ्रॉम द सिटी ऑफ कोलकाता। ही इज अ कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड at EMRI and Fortis Hospitals at Kolkata. He's also been at the Department of Endocrinology and Diabetes at the University Hospital in Birmingham, and member of the Royal College of Physicians of UK in 1995. He's done extensive research on PCOS and GDM, and with very good publications also at the international level, along with the Young Investigator Award of the International Conference of Endocrinology in 2002. He publishes very extensively, and he's been honored with an oration on PCOS by the Indian Medical Association and has co-authored several books as well. So welcome, Dr. Binayak, to this forum. We are so happy you could finally make it. Thank you. And I have with me, I also welcome Dr. Sreevidya Venkatraman, who's a very close friend as an astute physician and diabetologist from the city of Chennai. She's a qualified internist with 5 years of teaching experience, but 15 years of working in multi-specialty hospitals across India and also outside India, with special interest in diabetes, both type 1, type 2, as well as gestational diabetes and diabetes in cancer patients. Women's health and medical management of obesity has been her forte. So even throughout COVID, she has been working at the hospitals, and we salute you for that. And with that, she's currently a consultant at the MGM Healthcare, senior consultant internal medicine, and in charge of preventive health checkups at MGM Healthcare Chennai. And she is also a very familiar face at all our conferences, as well as publishes as she is a clinical researcher. Welcome, Dr. Sreevidya. Hi. And we have from our very own Mumbai, we have Dr. Vyankatesh Shivane. He is a consultant, a physician and diabetologist associated with the Department of Endocrinology at KEM Hospital, Mumbai, Jaslok Hospital, Sadhana Diabetes and Hormone Clinic, Mumbai, with 20 years of experience, highly published, and I know I follow his research work as well, so he's an accomplished researcher as well. So with that, I welcome our, really wonderful expert and experienced panel today for the discussion, and I hand it over to you. So, Purvi, let me start the ball rolling. Thank you very much for inviting me. We'll start off with straight away moving on to the topic of the vitamin D, which is like the Devanand of vitamins. You know, it's ubiquitous. It is there. You might like it, you might not like it, but you cannot deny the fact that it is a very important vitamin, at least in science.
And today it is something that is very topical. So I'll start off the question ball rolling with my question to Dr. Sreevidya. Dr. Sreevidya, you being the only one on this panel, I think it's probably natural to go to you with this question that why do you think that vitamin D deficiency affects women so much, and what is your experience with the number of people who have vitamin D deficiency in women? Good evening, everybody, and thank you very much, Purvi, for having me on this panel discussion. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आप लोगों के साथ मिलने में. And thank you very much, Dr. Binayak Sinha, for this question. Though it looks more and more like females are the one who have low vitamin D, but I think it is almost equal number in male and female. More so now, we are finding it out more and more in younger adults. As far as the females, deficiency wise, probably equal, but yes, the number, the range in of deficiency versus insufficiency is more in women, probably because most of these women either wear full sleeved, less exposure to sunlight, and the use of more and more sunscreen to prevent tan. I think that is one of the commonest cause, especially in India. We do not have too much of fortified foods with vitamin D. The awareness is not there and all. And probably that is one of the biggest reason why we are seeing so much of vitamin D deficiency. And suddenly we like, what do we do with this vitamin D deficiency? So with that, I think I would ask Dr. Vyankatesh, what do you sir think is the actual reason behind this vitamin D deficiency? Yeah. Thank you, Sri, and thank you, Purvi and team RSSDI for giving me opportunity to speak today on vitamin D. भारत वैसे देखा जाए तो इट्स क्लोजर टू इक्वेटोरियल. वी आर अ सनी कंट्री. हमारे भारत में धूप बहुत है, फिर भी भारत पे मीडिया का बहुत ज़्यादा आई वुड से कि एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है. और धूप में निकला न करो रूप की रानी ऐसे सॉन्ग जब आते हैं तो फीमेल्स आर लेस लाइकली टू एक्सपोज देमसेल्व्स टू सनलाइट. दैट्स वन ऑफ द रीजन आई वुड से. लेकिन अगर बात की जाए तो इंक्रीज इंडोर लाइफस्टाइल देयर बाय विच प्रिवेंट्स द एडिक्वेट एक्सपोजर टू सनलाइट. देन सेकंड कम्स इज पॉल्यूशन. अब कोई भी मेट्रोपॉलिटन 2 टायर और इवन मेट्रोपॉलिटन सिटी या 2 टायर सिटी में जाएंगे तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, जिसके कारण सनलाइट से विटामिन डी बनना थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है. तीसरा है स्किन पिगमेंटेशन. स्किन पिगमेंटेशन के अलग अलग प्रकार होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5. इंडिया के लोगों में टाइप 5 है. वो इट बर्न्स रेयरली, इट टैन्स, इट इज इनसेंसिटिव स्किन. वो तो इनसेंसिटिव स्किन होने के कारण में सनलाइट से जो विटामिन डी अपने स्किन पे गिरना चाहिए और उससे जो विटामिन डी बनना चाहिए उसमें काफी ज्यादा समय लगता है. और ऐसा देखा जाए तो सुबह 10 बजे से 3 बजे की धूप जो है वो इंडिया में एडिक्वेट मात्रा में विटामिन डी पैदा करती है. वी आर हार्डली गोइंग टू सनलाइट बिटवीन दैट 10 a.m. to 3 p.m. time. Absolutely. Then there are cultural practices like using of burqa or maybe parda system. These are the challenges, especially not only in females but nowadays also in males, which are finding more and more difficult of getting the problem of vitamin D deficiency in a bigger way. लेकिन विटामिन डी टेस्टिंग तो हम करते हैं, लेकिन हम विनायक सर से जानना चाहेंगे, विनायक सर की आप व्हाट शुड बी द आइडियल लेवल ऑफ विटामिन डी. हम चेक तो करते हैं, हमारे पेशेंट बहुत ज्यादा लेवल चेक करते हैं, उसमें बहुत सारा कैटेगराइजेशन होता है. तो मैं आपसे 2 चीज जानना चाहूंगा. एक तो व्हाट शुड बी द आइडियल लेवल ऑफ विटामिन डी दैट नीड्स टू बी मेंटेन, और दूसरा ऐसा कोई एज वाइज कट ऑफ है क्या कि यंग लोगों में इतना होना चाहिए, ओल्ड पेशेंट्स में इतना होना चाहिए या बच्चों में इतना होना चाहिए, ऐसा कोई कट ऑफ है क्या सर? So I will stick to English because my Hindi is atrocious. Sure. ये है कि विटामिन डी का डेफिशिएंसी जो है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है एल्डरली पीपल. For the simple reason, the real benefit of providing vitamin D supplementation is seen in elderly because it reduces the incidence of falls. That is one completely proven thing. There is no doubt about it. Definitely. And you know, in diabetes, it is also very important because if you fall less, the chances of dying with diabetes is also there. There's a beautiful articles have been written on this, and you know that is the reason why we are most concerned about the elderly. But there is no age-wise cutoff for the elderly. You have to provide more vitamin D when you supplement them. For the normal thing is less than 12 is supposed to be deficiency.
Less than 20 is supposed to be insufficient, 20 to 30 is supposed to be okay, and more than 30 is probably not required. Mind you, this is all figures from the United States of America. Indian guidelines have even said that you should go up to 40. So it's very debated. The problem is, ऐसे कोई रिसर्च नहीं हुआ है जो एकदम सेट कर दिया है कौन सा लेवल होना एकदम जरूरी है और कौन सा एकदम परफेक्ट लेवल है। और ये एल्डरली के लिए ज्यादा होना चाहिए, सब कोई बोलते हैं हाँ हाँ ज्यादा होना चाहिए, मगर कितना एग्जैक्टली होने से फायदेमंद होगा एल्डरली के लिए ये अभी तक स्ट्रांगली प्रमाणित नहीं हुआ है। तो जो भी हो विटामिन डी लेना चाहिए, और विटामिन डी अगर टैबलेट्स में नहीं हुआ तो you should take it as supplements. So, Dr. Sri, what are the common sources of vitamin D that can be easily consumed? You know, we're talking of deficiency, but what are the common sources from which it can be used? So the most common source which is undebated is sunlight. मतलब आप जैसे डॉक्टर वेंकटेश ने बताया कि या तो सुबह 9 बजे से 3 बजे तक, या जहाँ पे डे लाइट सेविंग होता है वहाँ पे 10 बजे से 4 बजे तक, एनी टाइम बिटवीन 5 to 30 मिनट्स ऑफ एक्सपोजर काफ़ी है, मेंटेन करने के लिए काफ़ी है। और ऐसा बोले तो फिर हमारे जो किसान हैं वो लोग तो सारा समय खेत में ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों का भी आजकल देखा जाता है कि डेफिशिएंसी है। तो आई थिंक वो डार्कर स्किन टोन वाले कैटेगरी में शायद आते होंगे, तो वो तो दैट इज सनलाइट इज डेफिशिएंट। आज भी हम सप्लीमेंट्स लिख के देते हैं तो पेशेंट्स बोलते हैं कि हम आधा घंटा धूप में बैठ जाएंगे, तो कितने बजे बोलो तो सुबह 7 बजे। मैंने कहा 7 बजे नहीं होता, 10 से 4 के बीच में आधा घंटा सन। दूसरी चीज है कि काफी लोग आजकल वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन की तरफ जा रहे हैं। तो वेजिटेरियन फूड में unless it is fortified with specific vitamin D, like milk fortified with vitamin D or salt fortified with vitamin D, which is not very prevalent in India right now, तो वो मुश्किल है। लेकिन नॉन वेजिटेरियन फूड में जहाँ पे भी आपका ओमेगा 3 आता है, लाइक सैल्मन हो गया, एग योक हो गया, और सार्डिन्स करके एक स्पेसिफिक फिश आता है, उसमें विटामिन डी काफी है। लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है बहुत ज्यादा प्रमाण में खाना पड़ता है, तब जाके थोड़ा लेवल मूव होता है। तो आई थिंक सप्लीमेंटेशन इज स्टिल द बेस्ट ऑप्शन लेफ्ट फॉर अस। सो चलो हमने डेफिशिएंसी के लिए या तो डाइट या सनलाइट या सप्लीमेंट के फॉर्म में दे दिया, लेकिन सर वेंकटेश सर, व्हाट इज कि अगर डेफिशिएंसी हो तो क्या क्या फर्क पड़ता है? डेफिशिएंसी हो तो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद विटामिन डी डेफिशिएंसी? वेरी नाइस क्वेश्चन। विटामिन डी डेफिशिएंसी, अगर विटामिन डी का अगर शरीर में अभाव होता है तो इतने सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। इसके बारे में गए 20 साल में बहुत सारा रिसर्च हुआ है, बहुत सारा अच्छी तरह से रिसर्च हुआ है। उसके 2 प्रकार है। एक तो होता है हड्डी रिलेटेड। मैं विनायक सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हड्डी रिलेटेड विटामिन डी के क्या इम्पैक्ट है वो बताए। लेकिन एक्स्ट्रा स्केलेटल, देयर आर सर्टेन इफेक्ट्स अबाउट अपार्ट फ्रॉम बोन. Vitamin D may cause various other diseases, or it is associated, vitamin D deficiency is associated with various other diseases. मैं सर से पैर तक अगर गिनना चाहूंगा तो मैं सर से शुरू करता हूं कि a mental disorder like schizophrenia or depression, it is associated with vitamin D deficiency. Tuberculosis or upper respiratory tract infection or asthma जो chest related है, it is associated with vitamin D deficiency. The heart problems at times they have been proven to be associated with vitamin D deficiency. Metabolic syndrome या डायबिटीज, जिसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे, वो भी डायबिटीज से एसोसिएट हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज में जो जुवेनाइल डायबिटीज है, जो बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज होता है, द चिल्ड्रन विद टाइप 1 डायबिटीज आर आल्सो एसोसिएटेड विद लो vitamin D deficiency. Multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, these are also associated with vitamin deficiency. However, in last 1 decade, more and more research have been published with association of low vitamin D levels and cancer, especially breast cancer, colonic cancer, prostate cancer, pancreatic cancer. These are the risk. So these are the cancers which are associated with low levels of vitamin D. प्रेगनेंसी में भी अगर विटामिन डी की मात्रा कम हो तो मदर को हाइपरटेंशन, प्री एक्लाम्सिया होने का चांसेस ज्यादा है, जिसके कारण सीजरियन सेक्शन का प्रमाण भी बढ़ता है।
माल अब्सॉर्प्शन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं पेट से रिलेटेड, लाइक क्रोन्स डिसीज, विपल्स डिसीज, लीवर प्रॉब्लम्स, दे आर एसोसिएटेड विद विटामिन डी डेफिशिएंसी. Albeit, I would like to mention the fact that the primary research of vitamin D is associated with skeletal benefits. These are all extraskeletal benefits which are coming up and creeping up in more and more way. The skin conditions like psoriasis are also associated with vitamin D deficiency. But Binayak sir, आप skeletal benefits के और skeletal effects के बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये जो आपने बताया, बहुत सारी चीज बताया, ये सब एसोसिएशंस है, यानी कि इससे हो सकता है, मगर स्केलेटल जो डिफेक्ट है वो प्रमाणित है. हमारे देश में यंग एज में जो हम बोलते थे, हम जब मेडिकल स्टूडेंट्स थे, हम लोग ये बात बहुत करते थे. हम लोग का दो क्वेश्चन आता था. एक है रिकेट्स जो चिल्ड्रन में होता था, और ऑस्टियोमलेशिया जो ओल्डर्स में होता था. Which is not gone away. It is still there. You will occasionally see a vegetarian child walking in with a waddling gait. This is something that you even see today. So this is प्रमाणित. You can get weak bones, brittle bones, यानी कि हड्डी जो रहता है वो जैसे एक बिस्कुट जैसा बन जाता है, उतना हार्ड नहीं रहता है, थोड़ा फ्रेजाइल हो जाता है, जल्दी से फ्रैक्चर होने का चांस रहता है. और ये भी प्रमाणित है कि ये विटामिन डी का कमी से उम्र जब बढ़ जाता है तो फॉल्स होने का चांस ज्यादा हो जाता है. सो देयर इज अ हायर चांस ऑफ फॉल्स. So naturally, if you fall, you will fracture. But there is a group of people who feel that you do not fracture because you fall because you fractured. Okay. हड्डी खराब हो गया इसलिए आप गिर गए, और इसलिए आपको विटामिन डी की कमी नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलरली जब आपका उम्र 60-65 साल से ज्यादा हो जाता है. So this is also, it leads to weakness of the muscles and things like that. These are all proven deleterious effects of vitamin D deficiency. But we've talked about vitamin D deficiency, etc. But what we need to know now is whether we supplement, and that I think Dr. Venkatesh maybe you will be able to. I think we will ask Dr. Shri whether I have a couple of questions for you, Dr. Shri. First is, do you supplement every patient with vitamin D? सब patient को vitamin D देना जरूरी है क्या? एंड व्हाट अबाउट डायबिटीज? अगर डायबिटीज है पेशेंट को तो उनको विटामिन डी देना जरूरी है क्या? और ऐसे पेशेंट्स को एक्स्ट्रा मात्रा में कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन आप रिकमेंड करते हैं क्या? सब पेशेंट को विटामिन डी देना जरूरी है नहीं है, वो उनके कोमॉर्बिडिटीज पे भी डिपेंड करता है. अगर बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है, लेस देन 12 है या लेस देन 10 है, तो वी कैन ब्रिंग इट अप. बहुत सारे ऑर्थोपेडिशियंस मैंने देखे हैं जो बिना विटामिन डी लेवल चेक किए दे गिव विटामिन डी, एंड देन द विटामिन डी लेवल्स गोज वेरी हाई, एंड देन पेशेंट्स एंड अप डेवलपिंग लॉट ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशन. डायबिटीज में जैसे डॉक्टर विनायक सिन्हा ने बताया कि फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ इंडियन विमेन with diabetes have got early osteoporosis also. I'm sure Dr. Sinha will know more about it, but we have seen that they fracture more easily, and then unka life is bedridden unless surgery karo फिर सारा. तो डायबिटिक्स को विटामिन डी डेफिशिएंसी कवर करना जरूरी है, बट ये उतना ही प्रमाण में है जितना नॉन डायबिटिक्स के साथ है. ऐसा कोई अलग से उनको या अलग हाई डोज देना है या एज के हिसाब से हाई डोज देना है, ऐसा जरूरी नहीं है. जितना डेफिशिएंसी है उतना ही देना है, क्योंकि विटामिन डी एंड ऑफ द डे इज अ ऑयल बेस्ड विटामिन एंड इट रिटेन्स इन योर बॉडी, एंड वी डोंट वांट इट टू गो इनटू टॉक्सिक लेवल. प्रॉब्लम यहाँ आता है जहाँ पे लैब में वो लोग देते हैं लेस देन 10 deficient, 10 to 20 insufficient, 20 to 30 normal, then 30 to 100 acceptable. तो और हम लोग तो by the time the patient comes to me, the 110, 120 with hypercalcemia, the calcium levels are in and PTH is very low, and we are already fighting a different battle over there. So I personally feel we should supplement with a little caution, stick to the protocol of giving that 60,000 per week for 8 weeks, and then once a month, and then don't ask them to monitor and maybe check after 6 months if really needed. So right. That is what I usually do. Yeah. But having said that, I mean, there are so many overzealous doctor ki aaj mere ko dikha 4 hai,
विटामिन डी मैं इंजेक्शन लगाऊं, टैबलेट दूं, वो दूध में मिलाया वाला पाउडर दूं? सो आपका क्या, व्हाट डू यू से डॉक्टर सिन्हा, व्हाट डू वी तो डू देयर? तो देखिए, इंजेक्शन देने से कोई फायदा नहीं होता है। आपने जो जैसे बहुत सुंदर तरीके से बताया, ये सब फैट में स्टोर्ड रहता है, तो इट विल स्टे स्टोर्ड इन द फैट, एंड इंजेक्शन हैज नो अदर एडवांटेज एक्सेप्ट दैट द डॉक्टर कैन बिकम अ हीरो। देखो इतना जल्दी बढ़ा दिया। So it is, you can give it in oral forms. I totally agree with your description of 60K once weekly for 8 weeks, and then giving it for another 6 months, which is monthly, um, in the form of granules, in the form of oral tablets, whichever. There is no problems in the oral thing. There is no extra benefit from loading or anything like that. मगर एक चीज हमको रिसेंटली बहुत लोग बोलने शुरू किए हैं कि देखो, ये वीकली रिमेम्बर करना या मंथली रिमेम्बर करना, इसमें कॉम्प्लायंस का भी बात आ जाती है कि याद रखना कि महीने में उस दिन हमको लेना है एक तो कैप्सूल, सुबह थोड़ा दूध में गुला के। ये सब लोगों को याद उतना नहीं रहता है। उससे अच्छा है कि यू टेक अ स्मॉल डोज डेली. So you take 2000 IU every day, and I think there are lots of preparations which are there which you can take daily, which can supplement. So you can go for that also in indicated patients. But one thing is true, that we also need to know that will this prevent diabetes? Dr. Venkatesh? Yes, sir. Good question, sir. And I think that's something which every Indian would like to know. सबको ये जानकारी होगी कि विटामिन डी का सप्लीमेंट खाने से डायबिटीज हमारा कम होगा क्या? I'll go back 20 years before when I joined the department. I did a project where we have given the injectable, one shot of injectable vitamin D of 6 lakhs units, and we measured the fasting blood sugar, post lunch blood sugar और HbA1c हमने एक महीने के बाद पेशेंट्स का किया. That was the first study which we did in way back 2 decades prior. हमने देखा कि ब्लड शुगर में मॉडेस्ट डिक्रीज हुआ है. HbA1c में इतना, जिसको स्टैटिस्टिक्स की भाषा में कहते हैं कि सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ, बट थोड़ा सा मॉडेस्ट डाउनफॉल उसमें आया था. सो इट मे बी अ नेगेटिव आउटकम स्टडी, तो हमने पब्लिश भी किया था उसको. लास्ट 20 साल में इतने सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन के उसके रिजल्ट्स कुछ फेवर में है, कुछ अगेंस्ट है. लेकिन एक बात जरूरी मैं बताना चाहूंगा कि प्री डायबिटीज, जिसको हम डायबिटीज की पहली सीढ़ी कहते हैं, ऐसे पेशेंट्स को जब डेली 2000 से लेके 4000 यूनिट्स विटामिन डी दिया गया, वैसे पेशेंट्स को 6 महीने से लेके 1 साल तक के अंतर में, तो उनमें डायबिटीज में कटौती पाई, कमती पाई. तो एक डायबिटीज का जो प्रोग्रेशन है वो हॉल्ट हो गया था. इसका मतलब है कि विटामिन डी का डायबिटीज की मैनेजमेंट में जरूर कुछ ना कुछ रोल है. उसमें और ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है, और वहां पे लैंडमार्क ट्रायल्स अच्छे 3-4 मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स भी चल रहे हैं, जिसका डाटा हमको शायद 1 या 2 साल के बाद उपलब्ध होगा. लेकिन जैसे डॉक्टर श्री ने बताया और आपने बताया सर कि विटामिन डी डेफिशिएंसी को ट्रीट जरूर करना चाहिए. दूसरी बात है कि इंडियन सेंट्रल ओबेसिटी, पेट बाहर आता है. तो मेरे पास कोई पेट बाहर आए वाले जेंट्स आता है, तो मैं उनको मजाक में पूछता हूँ कौन सा महीना चल रहा है. सो देन दे फील दैट ओ आई एम सेंट्रली ओबीस. अगर आप उनको टीज करोगे तभी वो समझ पाएंगे. तो जेंट्स भी आते हैं, तो मैं पूछता हूँ कौन सा महीना चल रहा है, छठा है, 7वां है, 8वां है, 9वां है, तो उनको मालूम पड़ता है यार मुझे पेट कम करना है. ऐसे सेंट्रल ओबीस पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है. और यूनिवर्सल फाइंडिंग्स हैव बीन प्रूवन दैट विटामिन डी सप्लीमेंटेशन रिड्यूसेस दिस इंसुलिन रेजिस्टेंस. दैट इज अ की पैथोफिजियोलॉजिकल डिफेक्ट इन टाइप 2 डायबिटीज इन इंडिया. So I'm of opinion that yes, we need to treat patients with pre-diabetes also to supplement them with vitamin D, as Dr. Sri has said, as you have said, the preparations based on patient's compliance and patient choice. But more evidence is awaited. But whatever evidence is as of now is awaited, we can conclude that yes, vitamin D have some role in improvement of insulin resistance, some role in improvement of diabetes. लेकिन जब भी हम ये इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि ऐसे पेशेंट्स जो डायबिटीज अपने ओपीडी में आते हैं, सबका टेस्टिंग करना जरूरी है क्या? श्री मैडम, व्हाट यू विल ओपन अबाउट इट? साल में एक बार चेक करने में कोई नुकसान नहीं है, और नया डायबिटीज आ रहा है, सो डेफिनेटली विटामिन डी लेवल्स, जैसे आपने कहा ना कि इट इज एसोसिएटेड विद इंसुलिन रेजिस्टेंट फैक्टर, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ टाइप 2 अराउंड अस. बट द मोस्ट कॉमन फैक्टर हियर, आई फील, इट इज whether vitamin D is really causing insulin resistance, or it is the association of obesity in all these people
that lack of physical activity, exposure to sunlight. Right. What I have seen is also that जहां हम लोग विटामिन डी सप्लीमेंट करना शुरू करते हैं, ये दे बिकम अवेयर. जैसे आपने बोला ना कि सेंट्रल ओबेसिटी है और आपने छेड़ दिया उन लोगों को, तो अब तो अगली बार डॉक्टर वेंकटेश के पास जाने के पहले थोड़ा वजन तो मैं कम कर लेता हूँ करके कोशिश तो करते ही होंगे वो लोग ना. तो आई थिंक देयर that exposure, that physical activity is mobilizing their vitamin D or their calcium levels. It improves their HbA1c and glycemic control also. I do not encourage people, my patients, to check frequently at all unless I'm suspecting that this vitamin D has been given without prior checking. That is my biggest worry. But as an annual check, we do include vitamin D, and it definitely has shown some benefit, whether by cause and effect relation or by association. So once a year annual check, एंड जिनका पहले चेक किए बिना सप्लीमेंट्स पे हैं, जो कोल्डर क्लाइमेट से आ रहे हैं जहाँ पे सनलाइट नहीं है, तो उनके लिए फेयरली वंस ईयर. बट आई थिंक ओवर चेकिंग भी नहीं, क्योंकि विटामिन डी कैसा है, पहले विटामिन ई जब आया था तब हम लोग बोलते थे वी हैव द मेडिसिन, लेट्स फाइंड द डिजीज. अब आई थिंक वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट सिमिलर एसोसिएशन विद विटामिन डी. वी हैव दिस ह्यूज चंक ऑफ विटामिन डी प्रमोटिंग, and are we going towards associating a lot of diseases with it? So to err on the cautious side, I would take it a little tad bit slower only. So with that, I mean, अब बात हो गई है कैंसर की, अब बात हो गई है प्रेगनेंसी की, डायबिटीज की, जहां एक ऑटो इम्यून एक रोल आता है. देयर इज ए रोल ऑफ विटामिन डी इन immune boosting or immune function. What do you have to say about it, Dr. Sinha? तो देखिए, इन विट्रो स्टडीज, जब कोई मेडिसिन शुरू होता है ना, पहले तो लेबोरेटरी में उसका एग्जामिनेशन होता है और लेबोरेटरी के जो सेल्स होते हैं उसके ऊपर ये इसको प्रयोग करके देखा जाता है कि इसके कोई काम होता है कि नहीं. एंड इन विट्रो स्टडीज डेफिनेटली vitamin D has been shown to improve immunity by reducing oxidative stress, by reducing inflammation. So that proof is there in cells, also in animal studies. But in humans, the amount of proof that we have is still very nebulous. There is no definite proof. You see, there has been papers, particularly during this COVID, when immunity became such a huge thing and zinc became the top selling. There's been so much of work on vitamin D and COVID. And you know, the studies are so divergent in the results that they have come out with. Some studies have shown reduction of ICU admission. There are randomized control trials showing that there is no benefit. So where do we go? At this point of time, cautiously wait for it, to provide more evidence, and then decide what we use it for. And in effect, what I am trying to say is probably providing a summary of all the things that we've discussed today. Yes, it is important, but be very choosy. It is not a blanket cure for all medications. And, you know, like Dr. Sri said so correctly, and I really like that statement, we are looking for a disease to fit it in. You know, I don't think there is a need for that. Definite supplementation in people who are deficient, definite supplementation in people who are elderly, definite supplementation if you've got proven deficiency of vitamin D. But other than that, you know, to make it a kind of thing like ki vitamin D le lo, tumhara sab bimari dur kar do. I've had people coming to me saying that, you know, I'm taking vitamin D, how come my blood sugar is still high? You know, these kind of false expectations should not be raised in patients either. You know, I think we doctors have to take this responsibility कि हम सही जो situation है vitamin D का उसको हम पेश करें. You know, like in blood sugar, there is a randomized control trial published in New England Journal. I think, I can't remember, 2 years ago. 2 years ago. 2000. Yes, no benefit of vitamin D supplementation. Absolutely no benefit at all. So, हम जाए कहाँ यहाँ से? So, I think we have to be very practical. We weigh the pros and cons, and that is why we need doctors and not computers to treat patients. Exactly. So, you know, I think that is where, and I think I kind of said all the thoughts that I had in my mind. Maybe Dr. Venkatesh, you can also give your total summary of the whole session.
यस सर, एब्सोल्युटली। आई थिंक एज ऑफ नाउ हमारे हाथ में जितना एविडेंस है हम शेयर ऑलरेडी हमने हमारे लिसनर्स के साथ शेयर किया हुआ है, बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज विटामिन डी टॉक्सिसिटी। बहुत सारे पेशेंट्स को जब भी 2-4 गोली विटामिन डी की खाते हैं और उनको अच्छा लगता है तो दे कीप ऑन ईटिंग इट। तो पेशेंट्स को ये भी जानना जरूरी है कि ये विटामिन डी एक्स्ट्रा मात्रा में खाने से किडनी स्टोन हो सकते हैं, कैल्शियम लेवल शरीर की प्रमाण से ज्यादा बढ़ सकती है, ऐसे पेशेंट्स को इमरजेंसी में एडमिट भी करना पड़ सकता है। तो कोई भी विटामिन डी सप्लीमेंटेशन का चॉइस करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें कि उस आप फिट बैठते हैं क्या, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा, अगर आपको आवश्यकता है तो ही आप ले और पर्याप्त मात्रा में ले। ज्यादा मात्रा में विटामिन डी खाने से भी नुकसान होता है कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स मैंने देखे हैं जिनका विटामिन डी 300 है, 350, 250, which is sky high, which is not required. I mean, it takes lot। हमको पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, डायूरेटिक्स देने पड़ेंगे, सलाइन लगाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा साइड इफेक्ट के बारे में भी पेशेंट को कॉशियस होना चाहिए। सो ओवर द काउंटर भले विटामिन डी उपलब्ध है, लेकिन खाना जरूर डॉक्टर की सलाह से ही चाहिए। डॉक्टर श्री, आपका क्या फाइनल वर्ड है? सो आई थिंक मेरे को बहुत खुशी इस बात की हो रही है कि एक कड़ी बन गई है कि हाँ, अब हमको पता है कि विटामिन डी जितना जरूरत है उतना ही लेना है। डायबिटीज में बहुत ज्यादा पुश हो रहा है विटामिन डी का यूज। जिनको जरूरत है, वो डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो, उतनी ही प्रमाण में जरूरत है। हमको उसको अधिक मात्रा में नहीं देना है। ये कोई मिरेकल मेडिसिन नहीं है, ये प्रूवन मेडिसिन है जिसके वजह से हम बोन सॉफ्टनिंग या बोन फ्रैक्चर्स को हम प्रिवेंट करते हैं। एंड वो उसके बाद भी कैल्शियम लेना जरूरी है। एंड जैसे डॉक्टर सिन्हा ने बोला कि 8 वीक्स वंस अ वीक लेने के बाद में लो डोज 600 to 800 IU, इंडिया में 1000 IU में ही मिलता है इन कंबाइंड और सिंगल डोज मिनिमम। तो पर डे के डोज पे उतना ही लीजिए जितना आपके डॉक्टर ने बोला है। अगर आपके डॉक्टर के पास आप दोबारा नहीं जा पाया कोई, तो विटामिन डी जितना बोला है उतना लेके बंद भी कर देंगे तो आपके शरीर में वो रहेगा, क्योंकि वो फैट सॉल्युबल है। एंड ज्यादा प्रमाण में खाने का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट अगर आपने ज्यादा विटामिन डी लिया, कैल्शियम अधिक हुआ, किडनी स्टोन के अलावा कार्डियक accumulation of coronary accumulation, blood vessels के around, the calciums can get accumulated and can cause more blocks. It can increase your calcium scoring also. So it is something which जितना जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना ही लेना चाहिए। एंड डायबिटिक्स में जरूरी है। टाइप 1 डायबिटीज के प्रिवेंशन की बात होती है, कभी कभी प्रूवन नहीं है ये, इसीलिए बच्चों को पहले से विटामिन डी देने से टाइप 1 नहीं आएगा। ये ऐसी कोई, there is no proof. That is one thing which is a lot of studies is being done by in the US and in Canada right now. But जहाँ तक मुझे है, I think we should err on the cautious side as far as vitamin D is concerned. Yeah, I have one question to Binayak sir, that जैसे यूएस में फूड इज फोर्टिफाइड विथ विटामिन डी, वहाँ पे मिल्क वगैरह मिलता है। इंडिया में हम दूध में विटामिन डी नहीं डालते, पानी डाल के हमारा भैया हमको दूध देता है। सो इंडिया में ये डालना जरूरी है क्या? विटामिन डी फोर्टिफिकेशन आवश्यकता आपको लगती है क्या, और होना चाहिए? आपका क्या राय है सर? देखिए, ये कोई खराब बात तो नहीं है। अगर फोर्टिफिकेशन होगा तब तो the quantities that will be put will not be pathological, which will lead to these kind of things. What I think all of us, you, me, Dr. Shri, all of us, what we are trying to say is use judiciously. And if we fortify, we can get good levels. But even in America, even after fortification started, there were studies done and they found that there was not good levels of vitamin D, particularly in children, in whom they wanted to provide extra vitamin D through their cereals and through their milk. They found that levels were not coming up to adequate levels. So एक चीज तो मेरे को लगता है कि ये बीमारी है या नहीं है, सबसे पहले ये प्रमाणित करना करें। And I think that is something, since we've not been able to prove in 20 years, I doubt we will. ओके। और मेरा श्री मैडम आपको सवाल है कि प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा प्रेग्नेंट पेशेंट्स, दे डोंट ईट विटामिन डी एडिक्वेटली, द प्रेग्नेंट फीमेल्स, एंड इवन गायनेकोलॉजिस्ट्स एट टाइम्स दे आर रिलक्टेंट टू ट्रीट देम विथ हाई डोज ऑफ वीकली विटामिन डी।
आपका क्या राय है, आपकी क्या विचार है इस बारे में? देयर वाज अ पर्टिकुलर स्टडी जिसमें ये बोला गया था कि प्रेगनेंसी के पहले विटामिन डी दें, प्रेगनेंसी के बाद में दें, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में विटामिन डी टॉक्सिसिटी हो गया तो इट कैन हार्म द चाइल्ड. आई थिंक इसीलिए गायनोकोलॉजिस्ट थोड़ा दे गो अ लिटिल स्लो ऑन विटामिन डी. मे बी हम जो कैल्शियम उनको देते हैं उसमें विटामिन डी कॉम्बिनेशन के साथ देना उतना काफी है, क्योंकि कोई बहुत ड्रामेटिक चेंज नहीं होने वाला है फीटल हेल्थ में या इंसुलिन. अगर इफ शी इज अ जीडीएम स्पेशली वो ज्यादा होता है, तो हम लोग तो वी नो वी चेक विटामिन डी बिफोर दे प्लान प्रेगनेंसी. आजकल तो प्रेगनेंसी काउंसलिंग बहुत ज्यादा हो गया है, तो विटामिन डी पहले ही दे देते हैं. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में विटामिन डी बंद कर दिया जाता है और उसके बाद इफ रिक्वायर्ड रिस्क बेनिफिट रेशियो देख के फिर शुरू करते हैं हम लोग. आई गिव विटामिन डी बट एट अ वेरी like maybe go slow and check so that they don't develop toxicity. but ऐसे कोई बहुत बड़ा नुकसान होने जैसा नहीं है विटामिन डी लेवल का. बट बेनिफिट है कि नहीं है नहीं पता उतना. बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गायनेकोलॉजिस्ट तो बिल्कुल मना कर देते हैं. जैसे विटामिन डी टॉक्सिसिटी आएगा तो इट कॉजेस फीटल एबरेशंस. सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो वी डोंट गिव एनीवे. बट या सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर we can give, especially when there is GDM. There has been shown to have some benefit. Most important fact is postpartum में विटामिन डी देना बहुत जरूरी है, because they are not exposed, they don't go out, their diet is very bad, and then the chances of their developing diabetes in the long term, GDM mothers I'm talking about, is very high. So that is where we restart our vitamin D supplementations. Thank you. Okay, I think we've had a fairly long and detailed discussion about vitamin Absolutely. D and diabetes. Yes, And it's yes, been wonderful interacting with both Dr. Venkatesh and you, Dr. Sreevidya. yes. Thank you so May much. I hand the podium back to Dr. Purvi Chawla, and she wants to. Yeah, she's coming. She's coming. Take me on stage. How do you? Yes, she'll bring her back herself. Hi Purvi. So you're back. Hi. So I've been listening to the conversation, and I think it was very, very with lots of pearls of wisdom from each one of you, especially from RSSDI Core, our National President, Dr. Vasant Kumar Sir, our National Secretary, Dr. Sanjay Agrawal Sir, and the entire Executive Committee, as well as our social media cell. We are extremely thankful to each of you for sparing the time for RSSDI Diabetes Bytes. ऑडियंस आप सभी को पता है कि ये सब वीडियोस हम हमारे RSSDI वेबसाइट पे अपलोड भी करते हैं, जिन्हें आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं. डू शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली helpful, useful information that we all must be aware of, especially those suffering from diabetes or even pre-diabetes. And I think it was a wonderful conversation, and I'm really thankful. So on behalf of the entire National Core team as well as the social media cell, I thank Dr. Binayak Sinha, Dr. Sreevidya Venkatraman, and Dr. Vyankatesh Shivane for this wonderful episode of RSSDI Diabetes Bytes. Thank you once again. Thank you very much. Thank you very much. Thank Bye. you. Thank you. Bye. Bye.